Okay, this question is very important towards your any competitive exams. Okay, so the question is, if a car at rest, that means car at rest means initial velocity of the car is 0, accelerated uniformly, okay, to a speed of 140 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of how much? We have to calculate the distance. That means your velocity is given, your final velocity is given, okay, and time is given. Initial velocity is 0, but we have to calculate the distance. So there are 4 options here. The first option is correct, or second one, or third one, or fourth one. Which one is the correct option? We have to calculate it. Okay, so that means here u equal to we know that according to laws of motion, v is equal to u plus 8t. Okay, here u is equal to initial velocity, v equal to your final velocity, a is the acceleration, t is equal to time. Okay, but according to the question, a car at rest, that means your initial velocity is equal to 0 and accelerate uniformly to a speed this much. That means final velocity is equal to 144 km per hour is not a standard unit, convert into, so that is 144 into kilometer per hour means 5 by 18 meter per second. So 1 kilometer per hour is nothing but 5 by 18 meter per second. So this is the most important conversation. Okay, so you got it. So got it 16, now got it 8. So that final velocity is equal to 40 meter per second and time is equal to how much? 20 seconds. So now substitute this value, above values in this equation. Now in case of your 40, 0 plus a into time is 20. So a is equal to 40 divided by 20. So is equal to meter per second square. Your acceleration is constant, acceleration is 2 meter per second square, but we have to calculate distance. Okay, according to laws of motion, that is second motion, s is equal to ut plus half at square using the laws of second motion. So s is equal to u is equal to 0, time is 20 plus half into acceleration is 2 and time is 20 of square. Okay, now 2 to cancel, s is equal to 0 plus 400. So s is equal to 400 meter. So this is your final answer. Okay, so pilamane dekho, so which one is correct option? So your correct option is option C is correct. पिलाने देख ये क्वेश्चन केते इंपोर्टेंस तुम ये क्वेश्चन प्राय काउंसिल रे आसुची, ठीक अच्छे। तो ये टाइप रो क्वेश्चन देख केमिति को सॉल्व करिवो। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको पढ़िबार अछि कोन अछि, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 140 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of,
तेणु ये कौन कार इनिशियली रेस्ट अच्छी मैंने इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 अच्छी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन करुच्ची स्पीड केते देछि फाइनल स्पीड देछि 144 किलोमीटर पर आवर ओके 144 किलोमीटर पर आवर ताको आम कन्वर्ट कलु मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कलु ये गोटे कन्वर्सन दे देछि किलोमीटर पर आवर थिले 5/18 मीटर पर सेकेंड आम सल्व यहाँ को मन रखा पड़ो टाइम 20 सेकेंड और डिस्टेंस पचार तेणु फास्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन बाहर करा पड़ो और डायरेक्ट आम डिस्टेंस बाहर कर पार ना कहीं एक्सेलरेशन देनी ना तेणु v इज इक्वल u प्लस एटी तो फास्ट इक्वेशन मुझे पुट कली देख सब भैल्यू पुट कला एक्सेलरेशन मुझे बाहर कली तापर सेकेंड आम क्वेश्चन किंतु पचार इट कवर्स डिस्टेंस डिस्टेंस पचार सेकेंड इक्वेशन पुट कले एस इज इक्वल ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर तेणु ये आम डिस्टेंस फाइंड कली पे भिडियो जब भल लगुच लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब करवा जमारू भूल ना। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। थैंक यू।